Okay, so anyone who have completed, please share your screen so that all of us can we see together. Okay, Shandip ji, please share your screen. Okay, or anybody else who have completed and please share its screen. Hello, sir. Yes, hello. Yes, sir. Can I share my screen? Sure, sure. Yes. One sec. So, is it visible? Yes. So, this one first network I developed for belt one for Okay. the when it will start. So, it will take a 5 second delay to start for belt one, and for Okay. the similarly, Mm-hmm. the belt two will start immediately. Okay. And for the stopping condition, when the stop I press, the belt one will be immediately stop, and belt two it will start a off delay timer for 10 seconds. Then after that, belt two will stop. Okay. So I'll just first simulate the multiple instance logic. Just 1 second. Okay, so in this multiple FB, so I call that belt FB instance. So I'll just simulate through the multiple DB here. I got the all tags here. So I'll just all this start. So sir, is it visible? Yes, yes, yes. Okay. So the build two started immediately. Mm-hmm. And belt one after 5 seconds. Build one Then after 5 seconds. Again, I'll just toggle this and I'll just stop. Then belt one stopped immediately, and similarly timer started for belt two. mm. So this is for the multiple instance I used.
similarly I did for the parametric instance. In that we can do using the belt db. Just show. I took that variables for belt db in simulation here, belt start stop, and to the output b1 and b2. It's So no problem. I'll just simulate from here. So belt db start. 1 second. Why no middle hospital? Okay. 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 हाँ 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 ठीक है चलो चलो हाँ 19 इसको 4 बजे ऐसे चलती मेरे करो अटेंड कर No, just click on that box. It will get on. Yeah, okay. The download run. First start it. Yes. So I will start. The belt 2 has started. Immediately. Okay. 5 seconds belt 1 is started. Perfect. I'll just remove the start command and I'll just give the stop command. So belt 1 will be immediately stopped. Okay. Belt 2 after 10 seconds. Okay. Once again, show me the logic. The parent FB logic. Yes, sir. Okay. Correct. Here I use stat table. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes. Shall I stop my screen share? Yes. Yes. Okay. So now let me share my screen. Okay. So we have completed this part, like of the structure programming you can do via FC, FB, DB, and OB is also there. But OB we will take maybe day after tomorrow. Like here you can see we have completed with FC, FB, OB. Like for OB there are multiple OBs are there. So we will see the execution of each OBs. So but for this we need to have a PLC for the execution or for the testing of some OB, we need to have actual PLC. So we will take this topic day after tomorrow. Okay. Now some add-ins is available with Siemens that help you to reduce your work. Like I will explain one of the add-ins is, for example, here I have this FC, correct? Can you able to change it in FB? Is there any possibility that if you have created a FC, now later on you think that I should create FB of it? So is it possible to change FC to FB or vice versa, FB to FC? Have you ever seen this kind of thing? सर पहले कभी ट्राई नहीं किया, देखा भी नहीं है. Okay. So how can you do this? Like suppose let's take one more function. Okay. Okay. So I have written some logic here with FC.
So this is the FC that I have created. Perfect. FC2. Now what you want to change it in the FB. So if you want to change it in the FB, right click on the block, and here, if you, okay, I don't have in the list. So what you have to do now, you have to use the features that is available in add-ins. This add-ins. So by default, this type of feature is not available in TIA portal, but you can add that feature with the help of this add-ins. So where you will find the list of add-ins, so you need to visit to your support website. In support website, here you can find TIA V19 add-ins. You can simply search. And if you look at the add-ins, here you can see the first option, download TIA add-ins. So in TIA add-ins, there are multiple TIA add-ins are available. Just I was referring it to FCFB converter. Correct na? So like FCFB converter, there are multiple add-ins there. Copy PLC, FCFB converter, that is Git connector is also there, or test suite converter, know-how protection to applying the password. There are multiple DBs are available, multiple add-ins are available. You can check the list or export data set to Excel. बहुत सारे हैं. So you can just check the list, or if it is suitable to your project, or if it is relaxing your complex task, then you can add that particular add-ins in your project. But for adding those add-ins, what you need to do, for example, so first of all, if you want to add-ins, you need to, when you will install the TIA portal now, you have to use this TIA portal openness. Make sure that whenever you will install the TIA portal, you don't forget to check TIA portal openness option. By default, it already checked. So, sorry, by default, it will be already checked, but don't uncheck it. If you have unchecked it while the installation, then you won't able to use this feature. So this is a portion of your TIA portal openness. Okay, so once you have installed TIA portal openness, then second thing that you need to do is you need to add your users. Users means go to your computer management. Computer management. And here we have users and group. In user and group, if you will see here, I have Siemens TIA openness. I have this user, Siemens TIA openness. And now in this Siemens TIA openness, you need to have a member. Like I have the access for the everyone. So if you have are logging your Windows with a specific user, that particular user should be part of Siemens TIA openness. Then only your add-ins will get activated. Understood this point? Whatever the user that you have in your Windows, that user should be part of your Siemens TIA openness. Okay, so if you don't know how to add the user, click on add.
Here you will have to find the location, or you can go for the advanced or click on the find now. Here you need to search for Siemens TIA openness. A minute. So here your user should become like whatever the username that you have created, that you need to add inside the Siemens TI openness, or else in users, like I have something for the guest, double click on it, member of. So here you have to add location, sorry, advanced, and here you need to search for Siemens TIA openness. So in short, your window user should be part of Siemens TIA openness. Once it is part of Siemens TIA openness, then what you have to do, you need to download the add-ins, like from the support website, for example, this FC to FV converter, and make sure that it should be version dependent. So if you have V16, you will install this, and here it is written, it is possible for V17 to V19. So download this. Okay. Okay. So this is the folder that I have downloaded. Here you can see. So 109777 something, I can copy it from here, copy, and I am putting it in the desktop. Over here, paste. Okay, you can extract it. So you can extract it. So this is a folder that I am having. Now, if you want this particular FCFB converter in your add-ins, then you need to copy this particular converter. Like as I have extracted, there are two supporting documents that will help you in how you are going to use this converter or is this add-in. But for reflecting that this add-in to your TIA portal, you need to copy it, and please take care of the path. So path will be, if you want to note it down, you can note it. You have to go to your C, in C, program files, in program files, Siemens, here it is Siemens, in Siemens, automation, in automation, like if you have
whatever the TIA portal version you have. So portal V19. In portal V19, I have add-ins. And here in add-ins, you can see you need to paste that. So I have already that version is available, so I can paste it and I can replace it. So now once you have pasted your add-ins over here, it will reflect in your TIA portal. In TIA portal where it will be in the add-ins. So click your add-ins and here you can see you will get the list of all the add-ins that is available in that particular folder. So I have Siemens copy PLC. Where is FCFB converter? Here it is. Siemens FCFB converter add-in. Now what you need to do? You need to activate it. So click on activate. Now click on yes. So here you can see this particular FCFB converter is now activated. And once it is activated, now if you will right click on this particular FC, and here you can see you will find somewhere, here it is, FCFB converter. So what you want? Convert to FB, and for converting some settings are also there, like move a static variable FB to FC, है ना? Static variable को कहाँ move करना है? In out में करना है, temp में करना है, और remove करना है. Move return value. This will be applicable for FC to FB. Remove corresponding instance, remove supervision. This will be if you are doing ProDia configuration. Open block in editor. So this minor setting also you can do it from here, or if you click on convert to FB, here you can see this FC. Now FCFB converting is working. Now you can see here, earlier FC2 was FC, now it has converted to FB. So start motor, the same logic, and that is also reflected in this particular task here. So both option is possible. Either you can convert. अगर इसमें नो हाउ प्रोटेक्शन लगा है फिर भी कन्वर्ट हो सकता है ये? नो हाउ प्रोटेक्शन में एक सेकेंड चेक कर लेते अगर हैं. FCFB में प्रोटेक्शन लगा है नो हाउ प्रोटेक्शन का, हाँ, एक सेकेंड, लेट्स चेक इट. Password must be at least 8 characters long. कर दिया मैंने, not. Okay, so the block is now know-how protected. Right click, FCFB converter, convert to FC. No, the following blocks could not be converted. Reason the block is know-how protected. Action, remove the know-how protection. Correct. ओके सर. सर ये कह रहा हूँ कि अगर हाउ नो प्रोटेक्शन लगा है किसी ब्लॉक पे या इसी ब्लॉक पे लगा है आपने जो लगाया अभी, उसको कैसे, अगर हमको पासवर्ड नहीं पता तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट प्रोग्राम को इफेक्ट किए हुए? कोई ऑप्शन नहीं है.
विदाउट पासवर्ड नहीं हटा सकते। ओके सर। इसीलिए तो यूजर प्रोटेक्शन दी, नो हाउ प्रोटेक्शन दिया है ना, दैट इज अ मैटर ऑफ सिमेंस इंटीग्रिटी। अगर वो कहीं से हटा ले तो फिर कोई मतलब नहीं बना ना। यस सर, यस। ओके, so either both option are permissible. You can convert fc to fb or fb to fc. The only thing you need to add that file in the add-in folder. Add-in folder is will be available over here. When so in the add-ins, सिर्फ यहाँ पे ला करके आपको कॉपी करना पड़ेगा। एक बार आपने कॉपी कर दिया, दैट विल बी अवेलेबल टू योर add-ins फोल्डर, और add-in फोल्डर में अवेलेबल होने के बाद यू कैन सिंपली activate that particular add-in and then you can use it freely. Okay, clear? Okay. और अगर अगर नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स यू हैव टू चेक योर यूजर ऑथेंटिकेशन। योर यूजर शुड बी पार्ट ऑफ योर टीआईए ओपननेस, और टीआईए ओपननेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। सो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है, दैट यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। सो इन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर TIA portal integrated automation, you have to go to option. So here, this is installed TIA portal openness V19. तो बाय डिफॉल्ट वो चेक ही रहता है, अगर आपने अनचेक नहीं किया होगा तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा होगा। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लाइब्रेरीज। So just above add-ins now, we have the option of libraries. So what is the purpose of library? यूज किया है कभी आपने पहले? Anyone? नहीं सर, सर यूज मौका किया नहीं। है। Okay. See, so there are two type of libraries that is available in your TIA portal. One is project library and second one is the global library. Okay, so project library, if you create anything in the project library, that is only accessible inside the project. Okay, and if you want to import something from the outside of project, that should be that you can able to do it in the global libraries. So first let's see about the project library, how it is useful, and then we will go for the global library. So in project library there are two options. One is types and another one is master copies. In fact, अगर आपने पैनल या बेंचेस एडवांस वगैरह में फेस स्प्लिट बनाया होगा तो उसमें भी ये काफी यूज हुआ है, फेस स्प्लिट इंस्टेंस यहाँ पे बनाते हैं। ओके, ठीक है, अभी उधर नहीं जाते हैं। तो लेट्स first we will see master copies and then we will see types. So let's suppose I have again one more fc or fb, anything I am having. Suppose again function. I have this. Okay, so I have this start, then I have this lamp, and now this is the simple project that you have created. So आप क्या कर सकते हो? In libraries I have two options. First, types and master copies. Master copies नाम से ही पता लग रहा है, that is like the parent copy. जो फर्स्ट टाइम आपने डेवलपमेंट किया है वो पेरेंट वर्जन क्या है,
अगर उस पेरेंट वर्जन को स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है, दैट इन प्रोजेक्ट, दैट यू कैन हैव इट इन द मास्टर कॉपीज। मीन्स जो आप लोग बोलते हो मास्टर बैकअप है, दैट मीन्स द ओरिजिनल, द फर्स्ट बैकअप, एक्चुअल बैकअप, उसके ऊपर ही सारा का सारा मॉडिफिकेशन हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को आप मास्टर कॉपीज में ऐड कर दीजिए। सो दैट मीन्स एक्चुअल वर्जन जो है इसका वो यहाँ पे स्टोर होकर के रहेगा। करेक्ट। तो जब भी आपको सपोज करिए आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है समथिंग, यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस कर रखा है और वो चेंजेस जो है जैसा डिजायर्ड था वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी सपोज आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना था, वो मॉडिफिकेशन आपने इंप्लीमेंट किया एंड मॉडिफिकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन। सो व्हाट यू वांट, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग री इंजीनियरिंग, व्हाट यू कैन do, you can delete this fc, and that fc is already stored in your master copy. So what you will do, from the master copy you will drag it and put inside the program block again. So you will have that original version of your parent fc with you, वापस वही वर्जन आपको मिल जाएगा। This is the first thing that you can do with your master copies. अभी सेकेंड एक्सपेक्टेशन क्या है आपका कि ठीक है, अब आप चेंजेस क्या है स्टेप बाय स्टेप करते हो। लाइक हो सकता है मास्टर कॉपी था, देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव इम्प्लीमेंटेड सम चेंजेस एंड दैट इज रिवीजन 1, फिर रिवीजन 2, फिर रिवीजन 3, फिर रिवीजन 4। करेक्ट, ऐसे ऐसे आपने चेंजेस किए हैं। सो कैन बी एबल टू स्टोर दैट चेंजेस रिवीजन वाइज? Yes, we can, but that will is not possible in the master copy. That will be available with the type. This is master copies we already have. Now for this master copies, like I have stopped. Here I have stopped. This is going to be my first version, first revision. So what you will do, save it, and now drag this library and over here in types. As you will drag and drop, it will ask you, as you can see here, name of type, that is library. If you want to rename it, library, anything you can change. Version 0.0.1. This will be the first revision. Now, if you want to add some comment, yes, you can do. Now, okay. So here you can see, this is the master copies, and here you have saved the first revision of your particular FC. But remember one thing, once you have added in the type, now you don't have right access to it. Like here you can see, if I want to modify, I don't have right access to it. And how you are going to know that this particular FC have project type? So over the library, means over this FC, you can see that black arrow is there. Is it visible? I can zoom it a little bit. Here you can see this black arrow. This black arrow indicates that you have added a type of this particular FC. So now if you want to edit it and save new version, then what you need to do? Then you have to click over here. Click over here, and now you have to click edit the type. Click on it. And as you will click on edit, it will start you for the editing. Let's add one more variable. Voila, and save it. And now again click over here. Now it will ask you for the, it will give you the some option, release the version or discard the changes and delete the version. So if you will do this, it will back to the original means back to the revision 1,
and if you will click on the release the version, so the next version will get created. So earlier it was 0.0.1, now 0.0.2. Now click on OK. So if you will go to your libraries, here you can see this is my first version, this is my second version. Okay, and master copy is also there. So at any instance, if you want to go back to the previous revision, the same thing you have to do. Click on this FC, delete it, and from here you can drag it the first revision. So you have first revision in your project. Okay. If you want to go for the another revision, that you can drag and drop it simply. So this is clear. Master copy and project library. In project library, what is the meaning of types? Okay. Yes. So next we have global library. In global library, so as global means it is globally available. Na? Globally available means you can share a library from one project to another project. एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी शेयर कर सकते हैं. But देखिए, now there are few possibilities of using the library. The first is, अभी क्या है, if you look at the instruction ना, we already have so many instructions. यहाँ पे already कई सारे instructions हैं. But कभी कभी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सिमेंस लाइब्रेरी बना करके देता है आपको. डेडिकेटेड लाइब्रेरी लाइक इथरनेट का ड्राइविंग है, LGF है, LBP है ना. कुछ मतलब जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर ऑल किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, लाइक जैसे HVAC का लाइब्रेरी है. तो अगर आपको वो डेडिकेटेड स्पेसिफिक चीजें यूज करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी इन योर प्रोजेक्ट. क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, TIA पोर्टल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है. अब इसको आप मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. हो सकता है अगर आपको स्पेसिफिक HVAC के लिए करना है तो आपको वो लाइब्रेरी की नीड पड़ सकती है, तो सिर्फ आप इंपोर्ट करो, बाकी अदर यूजर को करने की जरूरत नहीं. तो फर्स्ट इज लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दैट लाइब्रेरी यू कैन add it in your project. So just for example, अभी Siemens का एक लाइब्रेरी है that is support for all the instruction. Like यहाँ पे जितने भी instructions है ना, उसका आपको support मिल सकता है. तो how to import that library? For example, smove है ना. इसके बारे में आपको पता नहीं है. नॉर्मली आप क्या करते हो, आप हेल्प में जाते हो, in the help section you can read about smove and वहां से इंप्लीमेंट कर सकते हो. बट ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पढ़ लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, करेक्ट. लेकिन और भी रिलायबल बनाने के लिए और भी इफिशिएंट बनाने के लिए सीमेंस ने एक इंस्ट्रक्शंस का लाइब्रेरी ही दिया है. हियर यू कैन सी इट इन TIA पोर्टल. So you can find additional information and program code for the above named example. तो जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको बना बनाया सैंपल कोड मिलता है, जो कि आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में टेस्ट कर सकते हैं. तो कहाँ मिलेगा वो? आइदर आप COS पे डायरेक्ट सैंपल लाइब्रेरी फॉर इंस्ट्रक्शन सर्च कर लीजिए, और यहां से भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी पास पे लेकर के जाएगा. Here it is FAQ पेज. तो मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये सिंपली मुझे वहीं लेके जाएगा. तो लाइब्रेरी विद प्रोग्राम एग्जांपल फॉर TIA पोर्टल इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पे हर एक वर्जन के लिए, जैसे फॉर 15.1 यहाँ पे 16 के लिए अवेलेबल है. तो मैटर नहीं करता, अगर आप सैंपल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन फॉर 16 भी इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक इट विल गेट अपग्रेडेड टू 19, अगर आप उस लाइब्रेरी को 19 में ओपन कर रहे हैं तो. ठीक है, डाउनलोड करते हैं.
So here you can see now it has downloaded. और इसको भी मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ. Okay. So this is the folder that I am having. So now अभी आपको क्या करना है? You have to open your project. Project में आपको libraries में जाना है. In libraries, now you have to go to global libraries. In global library, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं. एक तो क्रिएट न्यू ग्लोबल लाइब्रेरी, अगर आपको खुद का कोई लाइब्रेरी बनाना है तो उसके लिए. एंड नेक्स्ट ओपन ग्लोबल लाइब्रेरी मीन्स अगर आपके पीसी में कोई लाइब्रेरी पड़ा हुआ है, यू वांट टू ओपन इट, तो ओके, क्लिक ऑन ओपन एंड देन search it. Where you have to search, I have in the desktop. In desktop, here sample library for instructions. Okay, and this is the file, sample library for instruction, we have something this. So I have the library of v16, but if I will open it from the v19, it will automatically get upgraded to 19. So just you have to click on great. लाइब्रेरी थोड़ा बड़ा साइज में है, इसलिए इट विल टेक few minutes for opening. Okay. So now here you can see in the library, I got that particular sample library for instruction. और इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं, like types है, then we have master copies. So in master copy, ये S move था ना, so S move is available in your ladder. In ladder it is in extended we have in the string or S move. ये रहा.
So if you want the sample program of this particular instruction, what you will do, drag smove and drop it here. So here you can see it is in the group. अभी they have given you FC और उसके पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए they have given you DB also. So what you have to do, you can simply drag this FC, means इस FC को कॉल करना पड़ेगा. That's simple. FC को कॉल करिए and here you can see. Download it. Or here you can see. The logic is written, means sample instruction code is written over here. You can implement it. Or smove instruction. Here you can see CF6A6A, whatever the string that in the input that is transferring to this particular address. अगर आपको variables वगैरह कुछ change करने हैं तो they have given you DB also. तो DB में अभी this is my input string. Here you can see. यहाँ पे आप change कर सकते हैं. So let's suppose if I write Siemens, okay, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट वही ट्रांसफर हो गया. So for this they have created a sample library जिसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस का सैंपल प्रोग्राम मिल सकता है. तो फ्यूचर केसेस के लिए भी आप रेफर कर सकते हैं. So ये जो है दैट इज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी Siemens की व्यू. आप अपना खुद का भी लाइब्रेरी बना सकते हो. खुद का लाइब्रेरी बनाना मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर सेम पीसी में आप काम कर रहे हैं फिर तो लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, है ना. एक है प्रोजेक्ट जो जिसपे अभी हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे थे और ये दूसरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है ये रहा, है ना. दिस इज प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 1. अगर आपको सेम में let's go offline with this. Now अगर एक पीसी में 2 प्रोजेक्ट हैं फिर तो कोई इशू नहीं है. बट लेकिन लाइब्रेरी आप तभी बनाओगे ना जब जैसे कि अभी आपको अपने प्रोग्राम का कुछ पार्ट शेयर करना है. अगर कंप्लीट बैकअप शेयर करना है देन यू विल डू विद द आर्काइविंग. लेकिन अभी क्या है, आपके पास 2 मशीनें हैं, 2 पैरेलल चल रहे हैं. अब उसमें मशीन 1 का कुछ लॉजिक मशीन 2 में इंपोर्ट करना है. ओनली सम पार्ट लाइक एक एफसी हो गया, 2 एफबी हो गया, व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट है. तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑल द प्रोजेक्ट, सारा का सारा प्रोजेक्ट ट्रांसफर करके री इंजीनियरिंग करने की बजाय आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो एफसी को माइग्रेट करेंगे. उस एफसी की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं. अब 2 चीजें हैं, अगर सेम पीसी में है फिर तो करने की दिक्कत नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, सिंपली चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर सेम पीसी में है तो. लाइक यहां से ड्रैग किया और यहां पे देखिए इधर ड्रॉप कर दिया. This simple copy paste you can do if you have project in the same PC. लेकिन ये चीजें आप नहीं कर सकते अगर दूसरे यूजर को करना है तो, है ना. यहाँ पे अभी जो भी उधर था वो सभी चीजें आ गए. इनकेस आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है तो दैट आल्सो यू कैन डू. रिप्लेस करना है ओके, है ना. बट now I am considering this project 2 is in the different PC and this is in the different PC. So for that what you need to do, this library you need to add it in the library first. तो पहले प्रोजेक्ट के आप लाइब्रेरीज में ऐड करना पड़ेगा. So how to add that? So for example, and if अगर आपका लाइब्रेरी यूज हो चुका है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं. लाइक सैंपल लाइब्रेरी अभी मुझे यूज नहीं करना है तो व्हाट आई विल डू, क्लोज दिस, सॉरी, क्लोज ग्लोबल लाइब्रेरी. यस, नाउ ए लाइब्रेरी इज क्लोज.
So what you will do, this particular library FC2 आप सबसे पहले करेंगे क्रिएट. तो द नेम इज library1 और ये library1 कहाँ पे सेव हो रहा है? डेस्कटॉप सैंपल लाइब्रेरी. सो आई एम चेंजिंग द पाथ. सपोज डेस्कटॉप में it is saving into the let's create a new folder. I am having into the library. लाइब्रेरी में सेव करना है. ओके, there you can see I have this library1. और भी library1 में दो ऑप्शन है. मास्टर कॉपीज. तो मास्टर कॉपीज इज सिमिलर लाइक library2 लाइब्रेरी जो अभी करंट लाइब्रेरी है दैट यू विल एड इट इन द मास्टर कॉपीज. लेकिन अगर आप उसके रिवीजन भी शेयर करना चाहते हो, मीन्स जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी हमने बनाए थे उसके अगर आप रिवीजन भी शेयर करना चाहते हो, टाइप शेयर करना चाहते हो, ये जो लाइब्रेरी है, तो दैट ऑल्सो यू वांट, दैट ऑल्सो यू कैन एबल टू शेयर. बट उसको हमें कहाँ ऐड करना पड़ेगा? ग्लोबल लाइब्रेरी के टाइप्स में. सो मीन्स इस टाइप को यहां से ड्रैग करना पड़ेगा और यहां ला करके ड्रॉप करना पड़ेगा. अगर उस टाइप्स को आपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में छोड़ दिया तो दैट इज ओनली एक्सेसिबल इन दिस प्रोजेक्ट. अगर उसके रिवीजन को शेयर करना है ग्लोबली तो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के टाइप्स को ग्लोबल लाइब्रेरी के टाइप्स में ऐड करना पड़ेगा. ओके, मास्टर कॉपीज में यू कैन ऐड एनीथिंग लाइक, चलिए DLFB ये था, मैंने मास्टर कॉपीज में ऐड कर दिया. ओके, नाउ you can save this library. Correct. अभी आप क्या करोगे? You will share this folder. This particular folder को आप share करेंगे. Whatever is in your desktop. I have this library. इस particular folder को आप share करोगे library1 to your colleague. And now वो क्या करेंगे? So he will open his project. Now he will go to his library and click on the open global library option. In open global library option, he will go for the desktop. In desktop, he will search for that particular location. That is library. Desktop, library, library1 and is open. Okay. So it is giving me the error that library is already open, इसलिए open नहीं करने दे रहा है. So अगर अलग पीसी में रहता तो ये केस नहीं आता. तो फर्स्ट लेट मी क्लोज फ्रॉम हियर. यहाँ पे इस लाइब्रेरी को मैं क्या करता हूँ? क्लोज कर देता हूँ. Okay. So again come over here and try to open it again. Library, library1, okay, open. तो अभी देखिए, now he got that access in his project library1. So master copies DLFB, you can drag and drop it. इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर दिया. So now he will have this DLFB in his project. अगर टाइप्स चाहिए तो टाइप्स he can also drag and drop. ओके, बट अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे तो ये जो लाइब्रेरीज है दैट इज इट इज ग्रेइश ना, कुछ ग्रे कलर से यहाँ पे मार्क किया हुआ है. इफ इट इज ग्रेइश इन नेचर दैट मीन्स you don't have right access to this particular libraries. मीन्स आपने कलीग को शेयर किया, कलीग ने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है. कॉपी करने के बाद उसने कुछ एडिट किया and he informed you that I have edited some part of your program. Now it is more accurate from the last version. पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है. So what you will do? You want same library again. Correct ना? लेकिन अगर अभी आपका कलीग वापस चेंज करके वापस इधर एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो परमिशेबल नहीं है.
लाइक कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ और ऐड करने की कोशिश किया तो इस लाइब्रेरी में उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो अगर आपको चाहिए एडिट करना है लाइब्रेरी में, तो ध्यान रखिएगा, जब आप ओपन करते हैं ना लाइब्रेरी, जब आप ओपन करते हैं लाइब्रेरी, सपोज लाइब्रेरी 1, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन एज रीड ओनली, आपको अनचेक करना पड़ेगा। देन क्लिक ऑन ओपन। नाउ इफ यू विल सी लाइब्रेरी 1, अभी कोई भी ग्रेइश कलर का बार नहीं है। दैट मीन्स इफ यू हैव चेंज, इफ यू हैव डन एनी चेंजेस, यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट इट, और फिर इस लाइब्रेरी का वर्जन आप सेव करोगे एंड देन यू कैन शेयर इट टू द कलीग। So in this manner, you can effectively use your libraries. Understood? Okay. So I am giving you 15 minutes. In 15 minutes, please check for both add-ins. You can import FCFB converter, test it in your project, and then for library also. 15 minutes is enough for testing these two things. Yes, sir. Yes. Okay. So quickly check these two things, then we will move forward.